डॉक्टर सूर्या सेठी आपको समझाया, बहुत जटिल विषय है ये जो प्राकृतिक गैस का कीमत क्या होना चाहिए। और हमारा भाई सागनिक जी भी आपको बता दिया कि ये जो आप देख रहे हैं ये सचमुच पूंजीवाद नहीं है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। मतलब ये सचमुच खुले बाजार नहीं है, ये भाई भतीजा के लिए एक पूंजीवाद है, दोस्तों के लिए पूंजीवाद है। So the main point I think that is being made is because there is a nexus between business and politics. हमारे बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो व्यवसायी हैं, जो और उनके साथ जो हमारे राजनेता हैं, इनके बीच जो गठबंधन है, इसीलिए आज हम देख रहे हैं हमारे देश का क्या स्थिति हो रही है। मैं 4.5 साल से ये किताब के ऊपर काम कर रहा हूँ और कुछ हफ्तों पहले हमने किताब छपा। अभी इन्होंने बता दिया, एक प्रेम पत्र हमारे पास आ गए थे 16 तारीख के दिन, और आप खुशी हो कि मैं बहुत खुशी हूँ कि आज एक और प्रेम पत्र आ गया। पहला प्रेम पत्र बड़ा भाई ने भेजा, छोटा भाई आज प्रेम पत्र भेज गया। एक वकील का चिट्ठी हमारे पास आ गए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जितना चिट्ठी आएगा मेरा उम्मीद है कि और ज़्यादा लोग जागरूक हो जाएंगे और कहेंगे कि शायद कुछ करने के लिए है इस किताब में। ऐसा है कि देखिए, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, दे आर सपोज्ड टू बिलोंग टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मैं कोशिश करूँ बहुत सरल भाषा में आप लोग को समझाने के लिए। ये विशेषज्ञ है, आपको पूरा टेक्निकली आपको एक्सप्लेन कर दिया जो गैस का जो कीमत है, प्राइसिंग है। मगर ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये आप प्राकृतिक गैस कहिए कि लोहा आयुष कहिए, ये कोयला कहिए, ये जमीन कहिए, ये पानी बोलिए, ये कुछ भी कहिए, these natural resources are supposed to belong to the people of this country. हर नागरिक का संपत्ति है, and the government is supposed to act as a custodian, as a trustee of these resources that belong to the people of the country. अगर सरकार पारदर्शिता से ये नियंत्रण नहीं करेंगे तो आप क्रोनी कैपिटलिज्म आज ही हो गया। आप एक नाम के वास्ते एक संस्था बनाया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये संस्था की क्षमता नहीं है, किसी को सजा देने के लिए क्षमता नहीं है, नियंत्रण करने के लिए सजा नहीं है, नाम के वास्ते एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। किसी को डांटने का भी सजा, इट इज नॉट इवन अ टूथलेस टाइगर। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन आवर कंट्री। सो व्हाट हैज हैपेंड इज these two brothers, the richest man and one of the richest men in India, they fought with each other. Why did they fight? Yeah, maybe Neeta and Tina didn't get along with each other, he thought. Yes, maybe that was the reason. But the most important reason why the two brothers fought, और ये सबसे मूल, ये दोनों भाई के बीच में जो विवाद हुआ है, इसके असली कारण क्या है? ये प्राकृतिक गैस कौन लेगा? अनिल अंबानी चाह रहे थे कि दादरी में, दिल्ली के नजदीक, एक बिजली उत्पादन के लिए कारखाना बनाएंगे जो सिर्फ भारतवर्ष नहीं, एशिया का सबसे बड़ा विद्युत गैस को इस्तेमाल करके एक बिजली उत्पादन के लिए कारखाना बनेगा। नहीं बन पाया और झगड़ा यहीं से शुरू हुई। दिस इज द रियल रीजन व्हाई द टू ब्रदर्स फेल आउट विद ईच अदर, एंड बिकॉज द टू ब्रदर्स स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया और बहुत कुछ अंदर का जो सूचना सार्वजनिक मंच पर आ गया, सबके सामने आ गया। सो दिस इज वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बुक, एंड देन आई रियलाइज दैट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी जैसे डॉक्टर सूर्या सेठी आपको समझाया, ये जो ठेका है, ये जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये जानबूझ के ऐसे इन्होंने बनाया कि ये आम आदमी के हित में नहीं है, सरकार के हित में नहीं है, कुछ लोगों को हित के लिए। The terms and conditions of the contract and the way in which this contract is implemented is completely weighed against the interests of the people of this country, in order to favor the company which is held by the richest man in this country. It's as simple as that. And the bureaucrats interpret those laws to suit them. In this book, I interviewed
Subir Raha. He was the chairman and managing director of ONGC. He died. This was the last interview he gave me. He said very clearly, whether it be Bharat Aluminium Company, whether it be Hindustan Zinc, whether it be Indian Petrochemicals Corporation, the same story is getting repeated over and over again. These are assets, this is wealth, these are resources that belong to the people of this country, and these have been literally sold for next to nothing to create new monopolies. Monopolies controlled by private companies. आप ONGC और Reliance के साथ आप कैसे तुलना कर सकते हैं? ONGC जो अनुदान देते हैं, जो सब्सिडी देते हैं, आपका केरोसिन इसीलिए आपको कम कीमत में मिल रहा है, रसोई का गैस कम कीमत में, रिलायंस तो सब्सिडी नहीं दे रहा ना। सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी सी। आज हमारे पास वकील का चिट्ठी क्यों आए हैं? क्योंकि हमने लिखा कि जयपाल रेड्डी को क्यों हटाया गया। अंग्रेजी बोलते हैं किक्ड अपस्टेयर्स। वो पेट्रोलियम मिनिस्टर था, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो गया। व्हाई वाज ही किक्ड अपस्टेयर्स? When Arvind Kejriwal says that, who runs this country, is it Mukesh Ambani or Manmohan Singh? Mr. Chidambaram got very angry with him. And he said, look, we have imposed a $1.8 billion penalty on Reliance. But what has happened? There's an arbitration going on, right? One judge, Chief Justice, former Chief Justice who had been selected by the government. Another has been selected by Reliance. But you need the third guy. And the third person you have not been able to find. Months are going, years are going, you still not be able to find that. Then the judge of the Supreme Court says, okay, I will choose one person from New Zealand. He will be the judge. And I have done my own investigation and find out. 3 days later said, sorry, he's the wrong person because his name was first in the list which was produced by Reliance. This is Justice Mitchell of the Supreme Court. He goes back on his own judgment. You know, some of these things I've not been able to write because it happened after the book got published. Even now, there's a debate going on कि जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, इन्होंने कहा कि हाँ, जब तक चुनाव चल रहे हैं आप गैस की कीमत नहीं बढ़ा पाएंगे. Now they're saying as soon as the elections are over, we want to increase the price of gas. Even waiting for the next government to be, before the next government is formed. You know, so this is the situation that we are living in today. There's one big difference, I must tell you. In this book, I have Manishankar Iyer, who was a former petroleum minister. He was removed from his position. We know why he was removed from his position. In WikiLeaks, it's been very clear. The Americans did not like him because he wanted a pipeline to be built from Iran through Pakistan to India. But there was another reason why Mr. Manishankar Iyer was removed. And in his speech, which is given in this book, he said that his own government, अभी जैसे सूर्या सेठी जी ने आपको बताया, 2.34 से 420 बन गया, और ये 420 same government, its own minister is saying his own government has committed a fraud on the people of this country. I didn't say it. This is Mr. Manishankar Iyer has himself said it. He's not denying it. Nobody can deny it. So all I'm saying is that the difference today is that more people are aware. आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश का भी जो आम आदमी है वो जागरूक हो रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हमारे देश में अनपढ़ लोग हैं, मगर हर अनपढ़ लोग समझदार हो सकते हैं. And that's the real situation. They're saying if the price of gas goes up, how will it affect you? It will affect you because it will have an impact on the price of electricity. It will have an impact on the price of fertilizer. Then you're saying, no, these are subsidized. But these same subsidies, your government said subsidies you don't want. But in the case of fertilizer and the case of power, when it comes to the increase in price of gas, nothing wrong with subsidies. This same government which says we want a free market system, you want an administered price of gas, and you want the price of gas to be designated in US dollars. The price of coal is not designated in US dollars. So these are innumerable examples. I'm just trying to highlight some main points, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एकदम सरल भाषा में समझाने के लिए कि
आज ये जो गठबंधन, जो बड़े बड़े जो पूंजीपति और बड़े बड़े हमारे जो राजनेता है, आज हमारे देश में आज ये स्थिति में हम क्यों पहुंचे हैं, और आज ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी का क्यों इतना राग है? Why are people so outraged at what they see, the brazen forms of crony capitalism? And it was in the Neera Radia conversations, it was Mr. Vajpayee's first son-in-law, Mr. Ranjan Bhattacharya, who tells Neera Radia that when I spoke to Mukesh Ambani says, don't worry, Congress to mera dukaan hai. If that same conversation was recorded today, he might say, चिंता तो मत कीजिए, कांग्रेस भी मेरा दुकान है और भारतीय जनता पार्टी में भी मेरा दुकान है. Both are in my pocket. Because you'll find the same story getting repeated in the case of the GSPC, the Gujarat State Petroleum Corporation. The same pattern. Mr. Narendra Modi says, oh, so much gas we have found, and later there's no gas. The same story is getting repeated over and over again. So that's really all I wanted to say. I thank all of you who have come here, and I think you should do your little bit to tell all those who don't know, this is the way, the nexus between business and politics and the way crony capitalism is working in this country. Thanks so much. बहुत बहुत शुक्रिया प्रणजय.